भी यहाँ मौजूद हैं जिन्होंने पीडी से मिलकर जो है ये प्रोग्राम खूबसूरत बनाया है आज। तो एक We shall provide grievance redressal and whistleblower mechanism for reporting grievances and fraudulent activities. We shall protect the rights and interest of all stakeholders and the society at large. Jai Hind. Thank you. शहरों में, गांव में, सिटी में और जगह जगह पहुंचाएंगे। ये करप्शन, रिश्वत, ब्राइबरी, जब ऐसा लफ्ज जबान पे आता है तो 3-4 दिन से मैं भी सोच रहा था कि क्या मैं इस काबिल हूं कि वो जो लोग पूरी एलीट होगी उनके सामने मैं रिश्वत के बारे में कुछ बोलूं। और ये रिश्वत एक ऐसा लफ्ज है, अगर मैं अभी आप सभी लोगों से एक सवाल पूछूं कि आप में से कोई ऐसा शख्स है जिसने रिश्वत ना दी, लेने की बात नहीं कहूंगा, मैं वो लफ्ज नहीं दोहराऊंगा, लेकिन अगर ऐसा लफ्ज मैं यहाँ पे सभी लोगों से इंक्लूडिंग आवर चीफ गेस्ट एडिशनल डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर पुंछ, बचपन से लेकर आज तक कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से हमने जरूर रिश्वत दी है। रिश्वत सिर्फ हम पैसे देने को कहते हैं, ये रिश्वत नहीं। आज की officers, respected citizens, media persons and my colleagues, it is my privilege to extend a warm welcome to all of you on behalf of the Anti-Corruption Bureau on the occasion of Vigilance Awareness Week 2025. This observance stands as a solemn affirmation of our collective commitment to the principle of integrity, transparency, and good governance across all spheres of public administration. Vigilance Awareness Week is celebrated in the memory of Sardar Vallabhbhai Patel, whose ideas of integrity and national building continue to inspire us. It serves as a reminder that collective vigilance strengthens the very foundation of good governance and public trust. The Central Vigilance Commission has chosen this year's theme, Vigilance, a shared responsibility. Vigilance, a shared responsibility. The Department of Power Development Department, JPDCL, occupies a place of immense significance in our government's framework as it touches the comfort life of millions of people. This department also plays a crucial role in improving the comfort lives, being of individuals and communities. The PDD is one of the most essential departments responsible for ensuring uninterrupted electric supply, infrastructure development, electricity power not only our homes and industries, but also the growth and development of every sector. Therefore, transparency, accountability, and integrity in PDD operations directly affect in progress and welfare of society by promoting ethical conduct, prevailing misuse of resources, and ensuring accountability in every operations. PDD can set a benchmark for integrity